प्राइमरी चिप प्रोड्यूसर कंपनी माइक्रोन टेक्नोलॉजी ने ATMP प्लांट के लिए गुजरात को चुना है। Now I would like to invite Shri Vijay Nehra, Secretary, Department of Science and Technology, Government of Gujarat, for his welcome address. Honorable Chief Minister Sir, Honorable Union Minister Sir, Honorable Industries Minister, Honorable Chief Secretary Sir, Kailash Nathur Sir, all of the Honorable Ministers of the State Government, dignitaries, ladies and gentlemen. It's indeed my privilege and honor to be inviting all of you to this historic and momentous occasion today for the MOU signing ceremony of India's first semiconductor manufacturing plant. સૌપ્રથમ વિજ્ઞાન અને પ્રૌદ્યોગિકી વિભાગ વતી માનનીય મુખ્યમંત્રી શ્રી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલ સાહેબને હું આજના ફંક્શનમાં આજના શુભ સમારંભમાં આવકારું છું. માનનીય મુખ્યમંત્રી શ્રીની આગેવાની હેઠળ માનનીય મુખ્યમંત્રી શ્રી દ્વારા જે માર્ગદર્શન આપવામાં આવ્યું એ મુજબ 1 વર્ષ અગાઉ ગુજરાત સરકારે ઇલાયદી સેમિકન્ડક્ટર પોલિસીની જાહેરાત કરી. આજે પણ ગુજરાત ભારત દેશમાં એકમાત્ર રાજ્ય છે જેની ડેડિકેટેડ સેમિકન્ડક્ટર પોલિસી છે. માનનીય મુખ્યમંત્રી શ્રી દ્વારા ફક્ત પોલિસીની જાહેરાત જ નહીં પરંતુ એના અમલીકરણ માટે ઇલાયદી વ્યવસ્થાના ભાગરૂપે ગુજરાત સ્ટેટ ઇલેક્ટ્રોનિક્સ મિશનની રચનાને લીલી ઝંડી આપવામાં આવી, જેના લીધે આજે ગુજરાત એકમાત્ર સ્ટેટ બન્યું છે જેની પાસે એના ઇમ્પ્લિમેન્ટેશન માટેનું એક ડેડિકેટેડ ઓર્ગેનાઇઝેશન છે. આ બંને પગલાઓના લીધે દુનિયાભરમાં જે સેમિકન્ડક્ટર ઇન્ડસ્ટ્રીઝ છે એના લોકોમાં પ્રેડિક્ટેબિલિટી, ક્રેડિબિલિટી એક ઊભી થઈ અને માનનીય મુખ્યમંત્રીશ્રી આજે અમે આપનો આભાર વ્યક્ત કરવા માંગીએ છીએ કે આપની આગેવાનીમાં નિદર્શનમાં છેલ્લા 1 વર્ષમાં સતત અમને માર્ગદર્શન મળ્યું અને આપના સમર્થન થકી આજે ગુજરાત રાજ્ય માટે આપના ઇતિહાસમાં સૌથી મહત્વપૂર્ણ ઔદ્યોગિક પગલું આજે લેવામાં આવી રહ્યું છે. આપનું પુનઃ એકવાર હું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું. आज हमारे बीच भारत सरकार के रेल, दूरसंचार, इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी के माननीय मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव जी उपस्थित हैं. सर, गुजरात सरकार की ओर से मैं आपका आज के कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत करता हूं. हम सभी देख रहे हैं कि किस प्रकार 40 वर्ष से भारत में सेमीकंडक्टर उद्योग स्थापित करने के अनेक प्रयास किए गए, परंतु माननीय प्रधानमंत्री जी के स्वप्न को साकार करने में जिस प्रकार की भूमिका पिछले 1-1.5 वर्ष में आपने निभाई है वो अत्यंत प्रशंसनीय है. आज के कार्यक्रम में आपकी उपस्थिति हमारे आज के कार्यक्रम को एक अलग स्तर देती है, गरिमा प्रदान करती है. पुनः एक वक्त मैं आपका स्वागत करता हूं. Ladies and gentlemen, I am indeed privileged to have Shri Gurshan Singh, Senior Vice President and Head of the Global Assembly and Test of Micron Operations with his entire team today. Gurshan Singh ji, on behalf of the entire government of Gujarat, I extend a very warm welcome to you and your entire team. आपके साथ पिछले 1 वर्ष से 40 से अधिक हमने मीटिंग्स करी हैं, 50 से 60 घंटे हमने टेलीफोन पर बिताए हैं और आपका जो डोमेन एक्सपर्टीज है, कहीं ना कहीं हमें लगा कि आपकी जो ह्यूमिलिटी है, आपकी जो सरलता है, उसके कारण हमें आपके स्टैचर का पूरा अनुमान तब तक नहीं था जब तक हम विश्व भर में दर्जनों अनेक कंपनियों के संपर्क में नहीं आए. जब हम उनके संपर्क में आए तब हमें पता चला कि पूरे विश्व में सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में आपका क्या स्थान है और किस प्रकार का रिस्पेक्ट आपको जापान, ताइवान, मलेशिया, अमेरिका, सिंगापुर के सभी देशों में सेमीकंडक्टर के कार्य करती सभी कंपनियां, हम वाकई में आपकी उपस्थिति से गौरवान्वित हैं और हम आपको आज ये पूरा भरोसा दिलाना चाहते हैं कि आपके आज अनेक देशों में 11 जितने आपके प्लांट्स हैं, लेकिन ये जो प्लांट गुजरात में बनेगा, हम आपको आश्वस्त करना चाहते हैं कि ये प्लांट आपका आयोजन है कि सबसे मॉडर्न प्लांट बनेगा, सबसे बड़े प्लांट्स में से एक होगा,
हमारा प्रयास ये होगा कि आप इस प्लांट को, आज तक जितने भी मैन्युफैक्चरिंग के प्लांट्स बने हैं उसमें सबसे जल्दी कमीशन होने वाला प्लांट हम इसे बना सकें। હું માનનીય બલવંતસિંહજી રાજપૂત સાહેબ, આપણા ઇન્ડસ્ટ્રીઝ મિનિસ્ટર, આપનું સર હું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું। આપની સાથે અમે સતત સંપર્કમાં છીએ અને આપની આગેવાની હેઠળ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ ડિપાર્ટમેન્ટ, ડીએસટી અને બાકી બધા જ ડિપાર્ટમેન્ટ્સ એક થઈને આ પ્રોજેક્ટને સફળ કરવા માટે પ્રયાસ કરી રહ્યા છે। આપનો હાર્દિક સ્વાગત આજના કાર્યક્રમમાં છે। માનનીય મુખ્ય સચિવ શ્રી રાજકુમાર સાહેબ, માનનીય કૈલાશનાથન સાહેબ, સૌ વરિષ્ઠ અધિકારીગણ, આપનો પણ હું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું। અને સવિશેષ રીતે મંત્રીમંડળના જેટલા પણ માન્ય મંત્રીશ્રીઓ આજે અત્રે ઉપસ્થિત છે, આપનું હું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું। આ કદાચ પહેલી વખત એવું બની રહ્યું છે કે એક બે વિભાગનો કાર્યક્રમ હોય પણ આખી સરકાર અહીંયા ઉપસ્થિત છે, કેમ કે આવનાર સમયમાં આ પ્રોજેક્ટને સફળ કરવા માટે એક ટીમ વર્ક તરીકે આપણે બધાએ કામ કરવાનું છે। ફરી એક વખત અત્રે ઉપસ્થિત સૌ મહાનુભાવો, પ્રિન્ટ અને ઇલેક્ટ્રોનિક મીડિયાના તમામ સાથીઓ અને ખાસ કરીને ઇન્ડસ્ટ્રી સાથે જોડાયેલા તમામ લોકો જે અમારા આમંત્રણને માન આપીને આજે ઉપસ્થિત રહ્યા છે, એ તમામ મહાનુભાવોને હું આવકારું છું। જય હિન્દ, જય ભારત, જય જય ગરવી ગુજરાત। Thank you, sir, for your welcome address. Gujarat is the only state in India to have a dedicated policy for the semiconductor sector. Let us watch a short AV about the technological efforts of Gujarat towards development of infrastructure as well as ease of doing business. Connecting India to the world, Gujarat has been at the forefront of driving the growth index of the country. A strong and stable economy, coupled with Government of Gujarat's proactive and investor-friendly policies, have resulted in Gujarat emerging as a global business hub. In line with the Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi's vision of a self-reliant India, and led by the Honorable Chief Minister of Gujarat, Shri Bhupendra Patel, the state's conducive business environment has attracted investment from leading industrial giants, making it the manufacturing hub of the country. The state is an industrial paradise with its all-inclusive, sustainable development model, huge reservoirs of skill and knowledge, and vast business and investment potential. Gujarat is a leader in industrial sectors such as chemicals, petrochemicals, dairy, drugs and pharmaceuticals, cement and ceramics, gems and jewelry, textiles and engineering. Ushering a new era in the ever-evolving markets economies and driving the next phase of digital revolution, the government of Gujarat has identified a fresh growth avenue, semiconductor. Semiconductors are playing a critical role in the world in more ways than we can imagine. It is our collective aim to establish India as one of the key partners in global semiconductor supply chains. Gujarat has taken a lead by being the first state in the country to announce a dedicated policy for the semiconductor sector, specially crafted to suit the requirements of the industries of this sector and to propel Gujarat onto the global semiconductor supply chains. The policy is structured to guide and facilitate investments to make Gujarat the semiconductor manufacturing capital of India. Semiconductor are a foundational technology for electronics, critical for furthering enabling development of domestic ecosystems for emerging technologies such as artificial intelligence, communications, 5G, 6G, Industry 4.0, digital transformation, IoT, space tech, defense tech, high-performance computing, data centers, mobile computing devices, blockchain, metaverse, and AR, VR, XR. Gujarat, led by the efforts of Chief Minister Shri Bhupendra Patel, is progressing towards being an electronics system design and manufacturing ESDM giant,
thereby strengthening the vision of Atmanirbhar Bharat through Atmanirbhar Gujarat. Under the aegis of the Department of Science and Technology, Gujarat State Electronics Mission, GSEM, has been set up with a vision to build a vibrant semiconductor, display and design, and innovation. GSEM will organize efforts for promoting the industry in a more structured, focused, and comprehensive manner. It will function as a single window clearance system for the investors. GSEM is deeply committed to create a long-term, investor-friendly business ecosystem. American semiconductor memory manufacturing giant Micron Technology is a global leader in memory and storage solutions. Incorporated in 1978, Micron Technology has been at the forefront of innovation in the semiconductor industry for over 4 decades. Micron's cutting-edge memory and storage technologies power the world's most advanced devices and applications. Developing solutions for enabling digital transformation of businesses and enhancing lives globally, Micron products are the backbone of digital economy. Micron, a leader in innovation, is heavily focused on research and development to stay ahead of the curve and deliver unparalleled performance, reliability, and scalability. Powering the world's technology revolution, Micron Technology now joins hands to forge a strategic partnership with the government of Gujarat to establish the setup of memory chip assembly, ATMP facility, making Gujarat the home of Project Pioneer. The ATMP facility of Micron Technologies will be developed at GIDC Sanand 2 Industrial Estate. Gujarat welcomes Micron Technology. Suswagatam. विकसित भारत के लिए विकसित गुजरात, ये है सेमीकंडक्टर क्रांति की नई शुरुआत। और अब आमंत्रित करते हैं गुजरात राज्य के मुख्य सचिव श्रीमान राजकुमार जी को आज के इस अवसर पर अपने विचार प्रकट करने हेतु पधारे। आदरणीय मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र भाई पटेल साहब, भारत सरकार के आदरणीय मंत्री श्री अश्विनी कुमार जी, मिनिस्टर फॉर रेलवेज, कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी, आदरणीय उद्योग एवं श्रम मंत्री श्री बलवंत सिंह राजपूत जी, श्री गुरशरण सिंह जी, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट, हेड ग्लोबल असेंबली एंड टेस्ट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ माइक्रॉन, श्री के कैलाशनाथन जी, चीफ प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर, entire team of Micron, my colleague senior secretaries, and most importantly, all ministers of the Cabinet of Government of Gujarat, friends from the media, ladies and gentlemen. Indeed, today is a very, very proud moment for the country and for the state that we are going to witness signing of MOU between Government of Gujarat and Micron Technologies. This is a historic moment and we all are proud to be part of this very movement today. Sir, as you know, Gujarat is one of the most industrialized states in the country. It has only 5% population but contributes 8% GDP of the country. And we are already leader in several sectors of the economy such as chemicals, petrochemicals, pharmaceuticals, automobile, textile, diamond. And sir, under Chief Minister Sir's leadership and his vision, with the guidance and support of Honorable Prime Minister, Honorable Electronics and IT Minister, Sir, Gujarat has ambition to remain the leader in the field of electronics, semiconductor manufacturing as well. Sir, Honorable Prime Minister 20 years back started organizing vibrant Gujarat Global Investor Summits. From that day in 2003 and 2023 today, sir,
Gujarat has made rapid progress in attracting investment in all these sectors, whether it is infrastructure, port, power plants, industrial estates, sir. So keeping the same momentum under the leadership of Honorable Chief Minister, sir, Gujarat came out with this policy of semiconductor as well as electronic manufacturing, sir. But, sir, Honorable Prime Minister and Ashwini Kumar, sir, you were the source of our motivation. You first announced the India Semiconductor Mission, sir. And we took the lead from your policy initiative, and based on that, Gujarat quickly came out with this policy of semiconductors. Sir, we have decided that Vibrant Gujarat Global Investor Summit, the 10th edition, which will be taking place in January 2024, sir, we have changed our strategy now. Our strategy now is to attract iconic investment in all these sectors. And sir, now this is the historic movement. This is the first iconic investment which Gujarat is going to announce, which will take place in next few months and in the time to come, sir. And based on this iconic investment, our vision is to attract, to showcase downstream, upstream investment in this sector, and that will become the talking point, the selling point, USP of Gujarat in Vibrant Gujarat 2024 edition. Sir, we take this opportunity to thank Messrs. Micron for taking a very important decision to invest $2.7 billion in the state of Gujarat. We welcome you wholeheartedly. I remember you came, and it is the matter of trust. That is what matters as we move ahead. You had certain requests, and I am thankful to Honorable Chief Minister. Only in a couple of hours, your request was considered, approved, and communicated to you. So that is what is the speed, scale of commitment of Government of Gujarat, sir. We work as a team. And as my colleague, Mr. Nehra just spoke, we take pride in whatever we do in the state of Gujarat. Sir, it is a moment of pride for all of us. Sir, I remember the day, when COVID-19 lockdown was announced in the month of March 2020. And that day, if India has to become the third largest economy in the world, then we cannot depend upon so-called global supply chains alone. We have to develop our own chains. And sir, if India will become $10 trillion economy, Gujarat's vision is it will be $1 trillion economy on that day. Sir, this investment will be so important. It will not only generate employment opportunities directly and indirectly, but also help us in modernizing our industrial ecosystem. Today the world is progressing. Technology is the key to progress. And electronics is at the heart of that progress. Without electronics, I don't think we can imagine the modern world that we live in today. Whichever aspect of our life, it touches everywhere. Therefore, I am confident that today's historic MOU that we are going to sign will be a new chapter in the growth journey of our state, of our country. With these words, I once again welcome Messrs. Micron to the state of Gujarat and look forward to a very, very long, productive association. Thank you so much. Jai Hind, Jai Jai Garvi Gujarat. Thank you very much, sir, for your encouraging words.
Now we will watch a short film about Micron technology and its upcoming facilities at Sanand. For over 40 years, Micron has been a world leader in innovative memory solutions, transforming how the world uses information to enrich life for all. 2.5 quintillion bytes of data is stored, shared, and streamed every single day. It's all around us, in our connected devices, machines, and gadgets. It's captured in our data centers, stored in a cloud, and surging through networks. The story of every Micron chip starts on the design board, where engineers lay out billions of electronic components using computer-aided design tools to determine how the memory chip should be constructed. It can take years of research, thousands of process steps over months to build a single chip. Join us on a virtual tour of Micron's global assembly and test manufacturing process. After front-end fabrication, wafers are transferred using an automated material handling system to the component assembly area to begin the wafer thinning step. A chemical polishing process ensures uniform wafer thickness before being attached to an adhesive backing and split into individual dies using a diamond edge sword. For the die attach process, the good dies are picked by a robot arm from the wafer and attached onto a circuit board. Gold wire is then used to establish connections. Finally, dies are being encased in protective packaging at the encapsulation step, ready to be tested. Every Micron chip undergoes rigorous testing under accelerated stress conditions like extreme heat to ensure the highest quality. Additional speed testing is carried out to verify that each part meets or exceeds the required speed specifications. Each qualified part will be laser marked with part numbers and key identifying information, optically scanned and inspected to ensure strict fit and form specifications. Many of Micron's finished components go into memory modules and solid-state drives, where automated surface-mount equipment assembles memory and other components onto printed circuit boards. The final products will be packed using an automated packaging system for shipment to our customers. Micron is happy to announce its plans to build a new semiconductor assembly and test facility in India. Located in the Sanand Industrial Park in Gujarat, Micron will invest $825 million to build and operationalize the facility over the next few years. Built and operated with our sustainability goals in mind, the new leading-edge DRAM and NAND assembly, testing, marking, and packaging facility will be 500,000 square feet initially and will create up to 5,000 new Micron jobs and 15,000 community jobs over the next several years to meet future industry demand. At Micron, we value collaboration because that's where the best ideas are born. Our team members, partners, customers, and leadership work closely together to deliver our products. We set a high bar for ourselves and our industry because transformation always starts from within. Ladies and gentlemen, today we are honored to have with us a veteran of semiconductor industry, Shri Gurcharan Singh, Senior Vice President, Global Backend Operations, Micron Technology, who has over 30 years of manufacturing experience in operations and supply chain management, working across the globe. Sir, I would like to invite you to share your thoughts and experiences with us. आत्मनिर्भर भारत, माननीय प्रधानमंत्री जी का विजन हम सबका सपना is going to be true, अभी real होने जा रहा है. So I want to congratulate you all on that. Namaste and good evening. Thanks for the honor and privilege
to represent Micron today. I want to convey my heartfelt gratitude and appreciation on behalf of Micron to Honorable Chief Minister of Gujarat, Shri Bhupendra Bhai Patel ji, Honorable Minister for Railways, Communications and Electronics and Information Technology, Shri Ashwini Vaishnav ji, Honorable Ministers of Gujarat Government, Chief Secretary of Gujarat, Shri Rajkumar ji, and all officers of the Government of Gujarat and Government of India. And also all the dignitaries, my Micron colleagues and distinguished guests. We are very proud to be signing MOU today and adding India on to the global map to be a semiconductors manufacturer. Today truly is a historic moment, and we all ought to be super proud. And our initiatives today will prove to be a game changer in the coming years. This is truly an impressive milestone, one that deserves to be recognized and celebrated. I want to thank the center and state government for taking this decisive policy steps in attracting and supporting the semiconductors manufacturing in India. I still recall when we first started exploring our global footprint expansion opportunities in India back in 2022. Our collaboration and hard work resulted in last week's announcement of Micron's investment to construct integrated circuit assembly and test manufacturing facility here in Sanad. Our Sanad facility in GIDC Industrial Park will be a vertically integrated factory where we will have wafers in and finished DRAM and NAND products out. Our project named Pioneer will truly pioneer the opportunities for young engineers to develop semiconductors manufacturing skills. Our Pioneer venture will provide full learning opportunities here in Sanad and through our network factories in Singapore, Malaysia, Taiwan, China, Japan, and the US. Furthermore, we look forward to collaborate with academia to develop semiconductors manufacturing curriculum, which will open new avenues for our young professionals. We are also committed to bring our vendors and supply chain partners to set up their operations that will help develop sustainable ecosystem. A robust ecosystem will not only help Micron operations, but will also make India more attractive to other OSAT manufacturers. The signing of MOU today is a critical step in Micron's pursuit to diverse manufacturing footprint and to support our global customers. It is also a giant leap for Indian semiconductors initiatives, and together we are positioning India to become a global semiconductors manufacturing powerhouse. Lastly, must extend my special thanks to the ISM and GSEM team for enabling our investment decisions in India, and also want to call out the Department of Revenue for expeditiously concluding the APA in a historic record time. And I must point out, this conclusion happened within 5 months versus it takes several years in the well-developed other countries. So kudos to the tax department for this. So with that note, I do want to congratulate and thank you all. The fun is just to start. Thank you very much. Thank you very much, sir, for your valuable remarks. देवियों और सज्जनों, जिस मुख्य उद्देश्य के लिए इस कार्यक्रम में हम सब एकत्रित हुए हैं, उसके लिए अब आगे बढ़ते हैं। समय है MOU साइन और एक्सचेंज का।
सादर अनुरोध करते हैं माइक्रोन टेक्नोलॉजी के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट श्री गुरशरण सिंह तथा गुजरात राज्य के साइंस एंड टेक्नोलॉजी विभाग के सचिव श्री विजय नेहरा जी से कि आप MOU साइनिंग और एक्सचेंज के लिए आगे पधारें। फ्लैश नीचे करा ना भाई। न केवल गुजरात बल्कि पूरे भारत के लिए आज का ये ऐतिहासिक दिन। India is poised to become the semiconductor manufacturing hub in the coming days, and this strategic alliance will prove to be instrumental in making India a semiconductor hub. Indeed, proud moments for all of us. Congratulations and thank you. धन्यवाद। और अब निवेदन करते हैं गुजरात स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स मिशन के मिशन डायरेक्टर श्री विदय खरे जी से कि आप गुजरात सेमीकंडक्टर पॉलिसी अंतर्गत प्रोजेक्ट अप्रूवल लेटर प्रदान करें, जिसे स्वीकार करेंगे श्री अमृतदर सिंधु, डायरेक्टर माइक्रोन टेक्नोलॉजी। नए भारत के निर्माण हेतु सदैव अग्रसर है गुजरात। इतने कम समय में प्रोजेक्ट अप्रूवल लेटर और साथ ही ये दिन, बहुत बहुत धन्यवाद। और नाउ इट्स टाइम टू हैंड ओवर द लैंड अलॉटमेंट लेटर for the project site at GIDC Sanand 2 Industrial Estate. I would request Dr. Rahul Gupta, Vice Chairman and Managing Director GIDC, to come upon the stage and hand over the land allotment letter to Mr. Gaurav Luthra, Senior Director Finance, Micron Technology. त्वरित निर्णय सुव्यवस्थित अमलीकरण का फिर एक बार श्रेष्ठ उदाहरण प्रस्थापित कर रहा है गुजरात राज्य। धन्यवाद। चाहे बात हो संचार की या फिर रेल रिवॉल्यूशन की, अपने तकनीकी ज्ञान और नवाचार के विचारों से देश को न्यू इंडिया बनाने में अपना अमूल्य योगदान दे रहे हैं माननीय केंद्रीय मंत्री श्रीमान अश्विनी वैष्णव जी। सादर आमंत्रित करते हैं ऑनरेबल यूनियन मिनिस्टर ऑफ रेलवेज, कम्युनिकेशंस, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी श्री अश्विनी वैष्णव जी को अपने विचारों से हमारा मार्गदर्शन करें। आज के इस ऐतिहासिक समारोह में हम सबके अत्यंत इस गर्वी गुजरात के गौरवमयी मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र भाई पटेल जी, यहाँ उपस्थित सभी मेरे साथी मंत्रीगण, उपस्थित सीनियर ऑफिसर्स, माइक्रोन की टीम और मीडिया के बंधु, आज वाकई एक ऐतिहासिक दिन है। एक ऐसा ऐतिहासिक दिन जिसके लिए देश ने 40 वर्षों तक इंतजार किया। 1980 में सबसे पहले प्रयास किया गया था सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट भारत में लाने का। प्रयास हुए, काफी मेहनत से अच्छे प्रयास हुए, लेकिन जो सफलता देश को अपेक्षित थी वो सफलता उस वक्त नहीं मिल पाई। 1990 में फिर बड़े प्रयास हुए,
एक विश्व की सबसे जानी मानी सेमीकंडक्टर कंपनी को लाने के लिए इतना प्रयास किया गया था उस वक्त, समाओ वो भी क्लिक नहीं हुआ। फिर 2005-2006 में बहुत बड़े प्रयास एक बार फिर हुए, फिर भी वो प्रयास सफल नहीं हो पाए। आखिर हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी के हाथ से बहुत सारी ऐतिहासिक चीजें लिखी हुई है, ये इतिहास भी उनके हाथ से लिखना। हम सब सेमीकंडक्टर की इंपॉर्टेंस को जानते हैं। जैसे स्टील इंडस्ट्री होती है, अगर स्टील इंडस्ट्री है तो उससे बहुत सारी इंडस्ट्री बनती है। जैसे प्लास्टिक इंडस्ट्री है, प्लास्टिक इंडस्ट्री अगर है, डेवलप्ड है किसी देश में, तो उससे बहुत सारी कई इंडस्ट्री उससे बनती है। जैसे केमिकल इंडस्ट्री है, अपने गुजरात में तो केमिकल इंडस्ट्री बहुत ही डेवलप्ड है, तो केमिकल इंडस्ट्री अगर होती है तो उससे बहुत सारी इंडस्ट्री उस पर डिपेंडेंट रहती है, रॉ मटेरियल लेती है और कई सारी इंडस्ट्री उससे डेवलप होती है। वैसा ही रोल आज सेमीकंडक्टर का हो गया है। ये आज से 50 वर्ष पहले नहीं था, 30 वर्ष पहले नहीं था। 30 वर्ष पहले ये था कि हाँ, जब सेमीकंडक्टर की जहां जरूरत पड़े वहां लो, बाकी मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल सर्किट, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बनते थे। अब दुनिया की कोई ऐसी बड़ी चीज नहीं है जो बिना सेमीकंडक्टर के मैन्युफैक्चर हो सके। चाहे आपके सबके पास है जो मोबाइल फोन, इसमें कई 100 चिप्स लग जाती है, या फिर आपकी कार जिसमें 1000 से ऊपर चिप लगती है। घर में टीवी है, टीवी में चिप्स लगती है। ये आप इलेक्ट्रिसिटी लाइट देख रहे हो, प्रोजेक्टर देख रहे हो, इसमें चिप्स लगती है। एक एक ट्रेन में तो 10-10 हजार, 15-15 हजार, 20-20 हजार चिप्स लगती हैं। एरोप्लेन में कितने हजारों चिप्स लगती हैं। कोई भी प्रोडक्ट उठा के देख लो, आज हर प्रोडक्ट में सेमीकंडक्टर की तो जरूरत है ही है। यहाँ पे हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स के गुरु बैठे हैं, जो सेलफोन मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन के प्रेसिडेंट है महेंद्र जी। मोबाइल फोन इंडस्ट्री सेमीकंडक्टर मोबाइल फोन इंडस्ट्री के लिए एक बेसिक रॉ मटेरियल बन गया है। आज हम हिंदुस्तान में करीब करीब 3 लाख करोड़ के चिप्स, सेमीकंडक्टर्स इंपोर्ट करते हैं। उस 3 लाख करोड़ में से करीब करीब 1 लाख करोड़ है मेमोरी प्रोडक्ट्स, जो माइक्रोन बनाते हैं। माइक्रोन है, 2-3 और बड़ी कंपनीज हैं। माइक्रोन वर्ल्ड के टॉप लीडर्स में से काउंट होता है। गार्टनर एक बहुत बड़ी रिसर्च कंपनी है, उसके अनुसार माइक्रोन दुनिया में 5वीं बड़ी सेमीकंडक्टर कंपनी। मैं अगर गलती करूं तो माफ करना गुरशरण जी, लेकिन बहुत बड़ी, मतलब टॉप 10 में हमेशा माइक्रोन का नाम लिया जाता है। तो 3 लाख में से 1 लाख करोड़ करीब करीब हम मेमोरी चिप इंपोर्ट करते हैं। तो आज का जो ये MOU है, आज जो इतिहास बना है, इस इतिहास में भारत सेमीकंडक्टर में और विशेषकर आरंभ में मेमोरी चिप्स में आत्मनिर्भर बनने का बहुत बड़ा आज का ये स्टेप है। आप सबको बहुत बहुत अभिनंदन। आप सब इस इतिहास के भागीदार बने। मैं केवल 3 पॉइंट और रखूंगा। सबसे पहला पॉइंट रखूंगा प्रधानमंत्री जी का क्लियर विजन। जब हम लोग पहली बार प्रेजेंटेशन लेके गए पीएम साहब के पास, टाइम उसके लिए रखा हुआ था, 1 घंटे का टाइम रखा था पीएम साहब ने, लेकिन करीब करीब 2.25 घंटे तक प्रेजेंटेशन वो पीएम साहब ने देखा। एक एक लाइन पे उनके प्रश्न थे, एक एक विषय पे उनके 2-2, 3-3, 4-4 प्रश्न थे। इतना बारीकी से उस पॉलिसी के पहले डॉक्यूमेंट को पीएम साहब ने डिटेल में देखा, हमें आश्चर्य हुआ। हमें लगा प्रधानमंत्री जी जनरली एक इस तरह का होता है विचार की सीनियर लोग केवल पॉलिसी लेवल पे देखते हैं और जूनियर लोग पूरी बारीकी से देखते हैं, लेकिन इतनी बारीकी से उन्होंने देखा। उस मीटिंग के तुरंत महीने भर बाद में फॉलोअप मीटिंग, उसमें भी करीब करीब 2.25-2.5 घंटे के आसपास का प्रेजेंटेशन था। एक एक चीज डिटेल में, और सभी के भारत सरकार के जितने रेलेवेंट विभाग थे सभी को बुलाया उसमें।
इतना बारीकी से, जैसे एक अच्छा गोल, एक जो अच्छा फॉरवर्ड प्लेयर नहीं होता है फुटबॉल में, कि बॉल इधर जाए, इधर गई, इसको पास दिया, उसको आगे किया और एकदम ठीक से उसको गोल के अंदर लेके जाना, वैसी बारीकी से पीएम साहब ने इस पूरे प्रोजेक्ट को अपने हाथ में रखा। बहुत ही डिपार्टमेंट, खूब सारे डिपार्टमेंट्स का इसमें सहयोग पड़ता है। भारत सरकार के अंदर अंदर ही कुल मिला के करीब करीब 15 डिपार्टमेंट्स का इसमें सहयोग रहा और राज्य सरकार में भी 10-15 डिपार्टमेंट का सहयोग इसमें रहा होगा। तो इतनी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस को इतनी सरलता के साथ इस मुकाम तक लाना, ये आज की भारत की बड़ी पहचान है। आज जब पीएम साहब अमेरिका गए तो वहां पर जितने भी बिजनेस लीडर्स, जितने भी इंडस्ट्री लीडर्स, जितने भी देश दुनिया के नामी गिरामी जो सबसे बड़ी हस्तियां हैं, सबने एक ही चीज बोली कि भारत बदल रहा है। इतना तेजी से परिवर्तन आ रहा है कि जो पुरानी कई सारी दिक्कतें थी वो दिक्कतें खत्म हो रही हैं। ये उसका एक बड़ा उदाहरण है। जैसा गुरशरण जी ने बोला, एडवांस प्राइसिंग अग्रीमेंट एपीए ज्यादातर देशों में कई वर्षों तक, डेवलप्ड कंट्रीज में भी कई वर्ष लगते हैं, भारत में 5 महीने के अंदर अंदर कंप्लीट हुआ। एक बड़ा उदाहरण है किस तरह से पीएम साहब एक विजन के साथ, एक क्लैरिटी के साथ देश को आगे लेके जा रहे हैं। मेरा दूसरा पॉइंट रहेगा कि सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री दुनिया में बहुत ही तेजी से ग्रो कर रही है। $650 बिलियन की इंडस्ट्री है, $650 बिलियन की इंडस्ट्री आज है। आगामी 6-7 वर्षों के अंदर अंदर ये $1 ट्रिलियन की इंडस्ट्री बन रहा है। बड़ी बात होती है इतनी ग्रोथ। उस ग्रोथ का बड़ा फायदा, बहुत बड़ा लाभ हिंदुस्तान उठा सकता है। 2 कारण है उसके, 3 कारण है एक्चुअली। सबसे पहला कारण है, एक करीब करीब इस पूरी इंडस्ट्री में 1 मिलियन टैलेंट की जरूरत पड़ेगी। करीब कोई 9 लाख बोलता है, कोई 10 लाख बोलता है, जितने डिफरेंट एस्टिमेट्स हैं। कोई 8.5 लाख टैलेंट की जरूरत बहुत बताता है, लेकिन अंदाजन करीब करीब 10 लाख यानी 1 मिलियन टैलेंट की जरूरत है। वो टैलेंट भारत की सेमीकंडक्टर पॉलिसी ने शुरुआत से, प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हमारे लिए सबसे बड़ी स्ट्रेंथ रहेगी टैलेंट, क्योंकि दूसरे देश सक्षम है अलग तरीके से, उनके अपनी स्ट्रेंथ से, उनके पास बहुत समृद्धि है, तो दूसरे देश ज्यादा पैसे लगा लेंगे। जैसे अमेरिका ने $54 बिलियन लगाए, यूरोप ने $48 बिलियन लगाए, चाइना $140 बिलियन लगा रहा है इस इंडस्ट्री पे। हमने $10 बिलियन लगाया, लेकिन फिर भी सक्सेस हमें मिलेगी क्योंकि हम 80,000 इंजीनियर्स डेवलप करने के लिए कमिटमेंट दे रहे हैं। 80,000 इंजीनियर्स, 80,000 टैलेंट डेवलप करने के लिए सेमीकंडक्टर पॉलिसी में डे 1 से कमिटमेंट हुआ और विद इन 1 ईयर 104 यूनिवर्सिटीज के साथ टाई अप किया, पूरा कोर्स क्यूरिकुलम चेंज किया। किस तरह से आज की जरूरतों के हिसाब से बीटेक कोर्स, एमटेक कोर्स, स्पेशलाइज्ड इन सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग, स्पेशलाइज्ड इन सेमीकंडक्टर डिजाइन, स्पेशलाइज्ड इन वीएलएसआई की जो फिजिक्स होती है, जिस तरह की आगे भविष्य में रिसर्च एंड डेवलपमेंट होगा, उस तरह के स्पेशलाइजेशन, वो सारा का सारा 1 साल के अंदर अंदर कंप्लीट हुआ। दुनिया में एक कॉन्फिडेंस आया कि भारत में जो कहते हैं वो करते हैं। वो कॉन्फिडेंस आया तो टैलेंट सबसे बड़ा फैक्टर। दूसरा बड़ा फैक्टर रहेगा ग्रीन एनर्जी का। मुझे माननीय मुख्यमंत्री जी बता रहे थे अभी कि कच्छ में 30 गीगावाट का पावर प्लांट लग रहा है, सोलर प्लांट। 30 गीगावाट एक लोकेशन में, मतलब दुनिया में किसी को बताओ तो लोग 1 गीगावाट को बहुत बड़ा मानते हैं, यहां तो 30 गीगावाट एक जगह में लग रहा है। यानी जो दुनिया की आज की मैन्युफैक्चरिंग की जो सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट है ग्रीन पावर, वो हिंदुस्तान में और विशेषकर गुजरात में स्पेशली अवेलेबल रहेगा। तो आपकी जो स्कोप 2, स्कोप 3 एमिशंस की बात करते हो गुरशरण जी, वो आपके गुजरात में मीट हो जाएंगे। यानी आप दुनिया में अपने प्रोडक्ट को यू कैन सेल इट इन अ डिफरेंट, टोटली डिफरेंट वे।
You can say this is one product in which practically entire power is green. बहुत बड़ा ये चेंज आएगा। और तीसरा बड़ा जो फैक्टर रहेगा हमारे यहाँ की कॉस्ट स्ट्रक्चर। आज जो सेमीकंडक्टर का कैपिटल है उसके अगर कंपैरिजन में हम देखें, अगर उसको 100 रुपये ना, मैं देशों का नाम नहीं लूँगा, उचित नहीं होता, अगर उसको 100 रुपये माने तो जो दूसरे बड़े देश हैं डेवलप्ड कंट्रीज उसमें 140 या 160 रुपये की कॉस्ट आती है और हिंदुस्तान में कॉस्ट आएगी 80 रुपये की। 100 रुपये आज का कैपिटल है उसकी हिंदुस्तान में 80 रुपये आएगी कॉस्ट, और जो दूसरे समृद्ध देश डेवलप्ड देश हैं उनमें 140 या 160 की। ये जो तीन फैक्टर है, टैलेंट, ग्रीन एनर्जी और लोअर कॉस्ट, ये तीनों बहुत बड़ा स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेंगे भारत को। अभी यूएस प्रधानमंत्री जी ने भेजा था तो करीब 45 सेमीकंडक्टर कंपनियों से मिला, सब ने यह एक भाषा में कहा, एक ही स्वर में कहा, इंडिया इज गोइंग टू बिकम द नेक्स्ट बिग सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग हब एंड देयर इज नो डाउट इन इट। तो ये आज उसका पहला कदम है। मैं तीसरे पॉइंट में विशेष धन्यवाद देना चाहूँगा उन सब टीम मेंबर्स को जिनके नाम आज यहाँ अगर हम नहीं लें तो बहुत बड़ी कमी रह जाएगी। अमितेश, विजय जी, सब के सब टीम मेंबर्स जिन्होंने दिन रात मेहनत की और एक ऐसा एग्जाम्पल सेट किया जो आज कोई भी आज इंडस्ट्रियल ग्लोबल इंडस्ट्री वाले आके मिलते हैं तो वो जब नाम लेते हैं तो गर्व से सीना फूल जाता है कि हमारी टीम, पीएम साहब की टीम इतनी अच्छी टीम है, इतनी मजबूत टीम है, इतनी प्रोएक्टिव टीम है। तो ये माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश के गवर्नेंस में बड़ा चेंज किया है कि आज हमारे ब्यूरोक्रेट्स जो कि जिनको हमेशा एक अलग नज़र से देखते थे, वो आज ब्यूरोक्रेट्स ऐसे प्रोएक्टिव वे में काम कर रहे हैं कि दुनिया उसको पहचान रही है। मैं गुजरात को और माननीय मुख्यमंत्री जी को एक बार फिर बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने उस प्रोएक्टिवनेस में 4 चांद लगा दिए। मुझे जानकारी है कि साइक्लोन के टाइम में भी खड़े खड़े साइट पे खड़े खड़े आपने एलोकेशन लेटर साइन कर दिए। ये एक बहुत बड़ी चीज होती है, बहुत बड़ी चीज होती है जिसका आप अनुमान नहीं लगा सकेंगे आज, लेकिन इतना आपने ये प्रोएक्टिव स्टेप लिया जिसके कारण आज 22 तारीख को माइक्रोन का अनाउंसमेंट हुआ था और आज हुई 28 तारीख, मात्र 6 दिन के अंदर अंदर लैंड एलोकेशन, 6 दिन के अंदर अंदर एमओयू साइनिंग, प्रोजेक्ट अप्रूवल। इससे बड़ी स्पीड क्या हो सकती है? आपकी मेमोरी चिप इतनी स्पीड देगी? आज ये केवल एक शुरुआत है। मैं आपको कॉन्फिडेंस के साथ कह रहा हूं, जिस विजन के साथ प्रधानमंत्री जी सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री को, इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री को हिंदुस्तान में डेवलप कर रहे हैं, उसका सिर्फ और सिर्फ ये पहला कदम है। इस पहले कदम के बाद में और कई बड़ी चीजें होने वाली है, तो तैयार रहिए और बड़ी बड़ी चीजों के लिए। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय केंद्रीय मंत्री जी आपके इन प्रेरणादायी शब्दों के लिए। ગુજરાત પોલિસી ડ્રીવન સ્ટેટ છે, દેશનું ગ્રોથ એન્જિન છે। આત્મનિર્ભર ભારત માટે આત્મનિર્ભર ગુજરાતની સંકલ્પના સાકાર કરવા નીતિગત નિર્ણયો અને તેના અસરકારક અમલીકરણ માટે સદાય કર્તવ્યનિષ્ઠ એવા માનનીય મુખ્યમંત્રી શ્રી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલ ગુજરાતને દરેક ક્ષેત્રે અગ્રેસર બનાવવા માટે કટિબદ્ધ છે। સાદર આમંત્રિત કરીએ છીએ માનનીય મુખ્યમંત્રી શ્રીને આજના પ્રસંગે આપના વિચારોથી અમને માર્ગદર્શન આપશો। રાજ્યના પાટનગર ગાંધીનગર ખાતે રાજ્ય સરકાર તથા માઇક્રો ટેકનોલોજીના ગૌરવવંતા
MOU પ્રસંગે આપણી સૌની સાથે મંચ ઉપર ઉપસ્થિત કેન્દ્રીય રેલ મંત્રી તથા સાયન્સ એન્ડ ટેકનોલોજી મંત્રી શ્રી અશ્વિનીજી વૈષ્ણવજી, મારા સાથી મંત્રી શ્રી બળવંતસિંહ રાજપૂત, સૌ મંત્રીમંડળના સભ્યશ્રીઓ, માઇક્રોન ગ્રુપના સિનિયર વાઇસ પ્રેસિડેન્ટ શ્રી ગુરુશરણસિંહ, મુખ્ય સચિવ શ્રી રાજકુમારજી, મુખ્ય અગ્ર સચિવ શ્રી કૈલાસનાથનજી, સાયન્સ એન્ડ ટેકનોલોજી વિભાગના સચિવ શ્રી વિજયકુમાર નહેરા, ઉપસ્થિત સૌ સચિવશ્રીઓ, ઉદ્યોગ ક્ષેત્રના અગ્રણીશ્રીઓ, આમંત્રિત મહાનુભાવો, પ્રેસ મીડિયાના મિત્રો, સૌને મારા નમસ્કાર. વિશ્વ નેતા અને આપણા યશસ્વી વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીની તાજેતરની અમેરિકા યાત્રાની સફળતાને સાકાર કરતો આજનો આ પ્રસંગ છે. જે કહેવું તે કરવું એ એમણે આપેલો કાર્યમંત્ર છે અને અમેરિકાની તેમની યાત્રાએ ગુજરાત માટે આ મંત્ર પાર પાડ્યો છે તેમ આપણે ગૌરવથી કહી શકીએ. કેન્દ્રની નરેન્દ્રભાઈ મોદીની સરકારે ભારત સેમિકન્ડક્ટર પ્રોડક્શનનું હબ બનાવવાની નેમ રાખી છે. ગુજરાત પણ એમાં પોતાની આગવી અને દેશની પ્રથમ સેમિકન્ડક્ટર પોલિસી દ્વારા પોતાનું અગ્રીમ યોગદાન આપવા સજ્જ છે. આદરણીય વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્રભાઈ અને આઈટી મંત્રી શ્રી અશ્વિનીજી વૈષ્ણવ આ માટે સતત માર્ગદર્શન અને દિશાદર્શન આપણને મળતું રહ્યું છે. આજના આ ગૌરવશાળી સમારોહમાં આદરણીય અશ્વિની વૈષ્ણવજી ખાસ ઉપસ્થિત રહ્યા તે માટે તેમનો ગુજરાત સરકાર વતી હૃદયપૂર્વક આભાર વ્યક્ત કરું છું. આદરણીય વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીએ સફળતાપૂર્વક 9 વર્ષ પૂર્ણ કર્યા છે અને ભારત વિશ્વની 5મી સૌથી મોટી અર્થવ્યવસ્થા બની છે. આ માઇલસ્ટોન બાદ આઝાદીના અમૃતકાળમાં ભારતીય અર્થવ્યવસ્થાને $5 ટ્રિલિયન અર્થવ્યવસ્થા બનાવવાનો આદરણીય પ્રધાનમંત્રીનો સંકલ્પ છે. આ સંકલ્પ પૂર્તિ માટે ભારત આત્મનિર્ભર બને, દેશમાં ઉત્પાદન વધે તેવો તેમનો પ્રયાસ છે. ભારત ન્યૂ એજ ટેકનોલોજી વિકસે તે માટે આદરણીય પ્રધાનમંત્રી શ્રી સતત પ્રયત્નશીલ છે. ભારત વિશ્વનું સેમિકન્ડક્ટર હબ બને તે માટે આદરણીય વડાપ્રધાનશ્રીના વિઝનરી નેતૃત્વમાં ભારત સરકારે સેમિકન્ડક્ટર મિશનની શરૂઆત કરી છે. રાજ્યમાં સેમિકન્ડક્ટર ક્ષેત્રમાં નવું રોકાણ આવે, નવા ઉદ્યોગો આવે તે માટે રાજ્ય સરકારે સેમિકન્ડક્ટર પોલિસી હેઠળ રાજ્ય ઇલેક્ટ્રોનિક્સ મિશનની શરૂઆત કરી છે. ગુજરાત રાજ્ય દેશનું ફિનટેક હબ બન્યું. હવે આ પોલિસીના પરિણામે રાજ્યમાં વધુને વધુ ઉદ્યોગ આવશે અને ગુજરાત સેમિકન્ડક્ટરનું હબ બનશે અને વિપુલ રોજગારીનું સર્જન થશે તેવો મને વિશ્વાસ છે. આદરણીય પ્રધાનમંત્રી શ્રી ભારતમાં સેમિકન્ડક્ટરના ઉત્પાદન વધારવા માટે ખૂબ જ ગંભીરતાપૂર્વકના પ્રયાસો કરી રહ્યા છે. તેમના તાજેતરના અમેરિકાના પ્રવાસમાં સેમિકન્ડક્ટર મિશન અંતર્ગત દેશમાં 22,516 કરોડ રૂપિયા સેમિકન્ડક્ટર મેન્યુફેક્ચરિંગ પ્રોજેક્ટની જાહેરાત કરવામાં આવી છે. તેના પરિણામે સેમિકન્ડક્ટર જાયન્ટ માઇક્રોનને ભારત દેશમાં ઉત્પાદન માટે ગુજરાતને પસંદ કર્યું છે. ગુજરાતે આ વૈશ્વિક હરીફાઈમાં અગ્રેસર બનવાની દિશામાં રાજ્ય સરકાર સતત પ્રયત્નશીલ છે. આપણે ત્યાં હવે મેમરી ચિપનું ઉત્પાદન થશે અને જેનો ઉપયોગ મોબાઈલ, કોમ્પ્યુટર, ઓટોમોટિવ અને ઇલેક્ટ્રોનિક્સમાં થવાનો છે. આપણા માટે આનંદની વાત છે કે મેમરી ચિપનું ઉત્પાદન કરતું ગુજરાત ભારતનું પહેલું રાજ્ય બનશે. આજે આપણે સૌ જાણીએ છીએ કે વૈશ્વિક સ્તર પર ચિપ્સ અને સેમિકન્ડક્ટરની વધતી માંગ સામે આ ઉત્પાદનો દ્વારા વૈશ્વિક અછતની અપૂર્તિ આદરણીય વડાપ્રધાનશ્રીના માર્ગદર્શન હેઠળ ગુજરાત કરશે. ગુજરાતને જ્યારે દેશના ગ્રોથ એન્જિન અને વિકાસના રોલ મોડેલનું સ્ટેટનું
ગૌરવ પ્રાપ્ત છે ત્યારે દેશમાં સેમિકન્ડક્ટરના ઉત્પાદનની શરૂઆત ગુજરાતથી થાય તે આપણા માટે ગૌરવની વાત છે. માઇક્રોન દ્વારા સ્થાપવામાં આવનાર આ પ્રોજેક્ટથી આવનાર દિવસોમાં 5000થી વધુ પ્રત્યક્ષ અને 15000થી વધુ પરોક્ષ નોકરીનું સર્જન થશે. રાજ્યના કૌશલ વિકાસને વેગ મળશે. હું માઇક્રોન કંપનીનું ગુજરાતમાં હૃદયથી સ્વાગત કરું છું. તેમને ખાતરી આપું છું કે રાજ્ય સરકાર તેમની જરૂરિયાત તમામ સહયોગ અમે આપીશું. ભારત માતા કી જય. વંદે માતરમ. જય જય ગરવી. ખૂબ ખૂબ આભાર માનનીય મુખ્યમંત્રી શ્રી, આપના આ ઉત્સાહવર્ધક શબ્દો માટે. ધન્યવાદ. And now I invite Mr. Viday Khare, Mission Director, Gujarat State Electronics Mission, Government of Gujarat, for vote of thanks. Good evening, ladies and gentlemen. On behalf of Department of Science and Technology, I express our sincere gratitude to Honorable Chief Minister, Sir, for gracing the occasion. Chief Minister, Sir, has been guiding us continuously from formulating a policy to the implementation of this project. I thank Honorable Union Minister for Railways, Communication, Electronics and IT, Shri Ashwini Vaishnav-ji, for his kind presence and very inspiring address on this milestone event. I would like to extend my sincere thanks to Honorable Minister for Industry, Shri Balwant Singh Rajput-ji, for his support and guidance on this project. I extend our sincere gratitude to all the honorable ministers to grace this, who's gracing this occasion. I also thank Honorable Chief Secretary, Sir, to grace the event with his presence. Sir has been continuously monitoring the progress and guiding us on this project. I would also thank Shri Kailasnathan, Sir, Chief Principal Secretary to Chief Minister, for his constant support and guidance. I thank Mr. Gurusharan Singh, Senior Vice President, Micron Technology, and the whole Micron team which is present here for traveling from different parts of the globe to attend this event. I would like to extend my sincere gratitude to the senior officials of Government of Gujarat for their presence at this occasion. Your continuous support and further guidance will help us in completing this project within a record time. I would like to thank Shri Amitesh Sinha, Sir, Joint Secretary MIT, and ISM team for their constant effort to make this project possible. I would like to thank our esteemed guests from the Industries Academia for their presence at this event today. I would also like to thank all the media personnel present here. And the last but not the least, my sincere thanks to all the staff of Department of Science and Technology for making this event a grand success. Thank you all and have a nice evening. Thank you very much, sir. फिर एक बार आज के इस ऐतिहासिक कार्यक्रम गुजरात राज्य तथा माइक्रोन के बीच MOU साइनिंग सेरेमनी में शामिल होने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद. Ladies and gentlemen, refreshments का अरेंजमेंट कैफेटेरिया में है. All of you are requested to